तो है गाइस, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है कमाल की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम एक नया गेम ट्राई करने वाले हैं जिसका नाम है एलन वेक 2। तो बेसिकली इस गेम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका पहला पार्ट जो है एलन वेक 1 वो पहले ही रिलीज हो चुका है, बहुत पुराना है। सीक्वल है एलन वेक 1 का। और इस गेम में बेसिकली हमें करना क्या है, एक तरह का हॉरर सर्वाइवल गेम है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फाइट करता है अगेंस्ट भूतों के, मतलब भूतिया चीज जो होती है उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है या उनको खत्म करता है, एक तरह से सर्वाइव करता है उनके बीच। तो बाकी का जो है हम गेम में जानेंगे। आओ शुरू करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे न्यू गेम स्टार्ट करेंगे और हम स्टोरी नॉर्मल हार्ड हम चुनेंगे नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ही ठीक है भाई। स्टोरी हमारी Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. भाई गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को तो। ये कौन है? ये हमें? नहीं, हम तो नहीं होंगे यार। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो तो काफ़ी जवान टाइप है और उसके सर पे बाल भी है, तो गंजा है भाई। ये तो नंगा है। ओए भाई, कपड़े वपड़े कहाँ हैं तेरे? नंगा है ये तो। ये हमें? व्हाट? यस, हम ही है भाई। कपड़े किधर है मेरे? सही है यार। ऐसे तो शुरुआत नहीं सोची थी मैंने इस गेम की, बट जो भी है भैया, जैसी शुरुआत है वैसी करते हैं अभी हम। लुक अराउंड। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा आसपास मुझे, बट मेरी हालत हुई कैसे ऐसे? नदी वदी डूब गई क्या मेरी भाई? आई डोंट नो, देखते हैं, वो तो आगे पता चलेगा अभी। ओके, सामने रोड, कोई गाड़ी है आई थिंक। कोई गाड़ी है, गाड़ी है। Where'd he gone? कहाँ से? इधर से जाऊँ? यहीं से है रास्ता, या फिर मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ? आई डोंट नो कि मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ। इतनी जान है इसमें चढ़ने की? ना, वहीं से जाना है हमको। भाई मैं तो चले ही जा रहा हूँ भाई, कुछ है रास्ता। ओए भाई, भाई ऐसे डराओ मत यार। ओए भाई, ये क्या हो रहा है भाई? ये भी कोई तरीका है गूज़बम्स देने का? भाई अकेला हूँ मैं अपने रूम में भाई। हेलो, ऐसा ना करो। लेफ्ट, अच्छा बन गया स्टैमिना, भग सकता हूँ मैं। ओके भाई। ओए ओरे, है कौन भाई? कहाँ गया? चलो, कहीं तो चला गया वो। मेरे को भी कहीं ना कहीं जाना ही है भाई। जानवर आवाज कर रहे हैं।
ये फुसफुसा कौन रहा है मेरे कानों में? ये तो एक बस स्टैंड है भाई, ऐसा कुछ है क्या? हाँ छोड़ो। ओके ये रहे वो लोग। अरे ये कौन आ रहे हैं? भाई 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 भाई, गोलियां मार रहे हैं। अरे अरे ये रहा भाई, है क्या लेकिन ये? अरे मार दिया मेरे को तो भाई। चल क्या रहा है? भाई मेरा दिल निकाल लिया। भाई मेरा दिल निकाल लिया। मेरे को लगता है ये लोग उस डार्क चीज के लिए काम वगैरह करते होंगे। काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं इस गेम को खेलने को भाई। बहुत अच्छा लगने वाला है गेम, मेरे को लग रहा है, फील आ रही है। काम तो बहुत अच्छा किया डेवलपर ने भाई। Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. अरे नहीं, ये वो लग रही है मेरे को FBI वाली, जो एलन वेक 1 में थी, FBI वाली। Logan? वो लड़की लग रही है मेरे को ये। I will. शायद, देखते भी Bye, कौन है। kiddo. हाँ वही FBI वाली ही है। तो बेसिकली पार्ट 1 में इसने भी FBI का रोल किया था, मतलब एक तरह से Logan हेल्प thinks की you थी should एलन try की बहुत। cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. ये तो वही रास्ता है, पीछे वही है बस स्टैंड जहाँ पे मैं रुका था देखने के लिए। बस स्टैंड है क्या ये? A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll वैसी check out that map. इन्वेस्टिगेशन, ओके, इन्वेस्टिगेट करना है हमें। मेरे को जहाँ तक याद है जब मैं वो आदमी था, चल पहले मैप ही देखना है हमें। M4 मैप। ओके तो बेसिकली हम अभी यहाँ हैं। क्या गोल्स है हमारे? कंट्रोल से गोल। चेक आउट द क्राइम सीन, फाइंड द डेप्यूटीज। अच्छा चेक,
क्राइम सीन आई थिंक मेरे को याद है कहाँ हुआ था बेसिकली I यहाँ think I से hear मैं आगे someone. गया था Could चल be भाई our deputy. I can go take a look. आ रहा हूँ भाई ये रहा डेप्यूटी Over अपना here. Hey there. Agent Casey, right? हाँ भाई Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? I'm in charge Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, ये कौन बोला The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? विटनेस है कोई क्राइम के Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. अच्छा मेरे को देखते हैं I भाई want to see the body. बॉडी How do we देखते get आओ there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. चलो भाई डेप्यूटीज मिल Before गए we get to the crime scene, उससे there's time मिलना to है review the facts of the case so जनरल far. स्टोर पे Make sure I'm seeing the clues. The access to the case board inside the case board The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. oh Using each field office as a model in my head. The facts अच्छा are on the board. case Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. case सेम वही है देखो Already hard at work, Anderson. मुझे लग रहा है दिमाग में ही बना लेती है सब कुछ अपने We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. चलो भाई Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. बारिश हो गई The only thing भाई around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on वो me. देख ये रहा भाई जनरल स्टोर Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. चल भाई बॉडी भी देख लें बॉडी तो देख ही ली थी हमने भाई उसके छाती पे से वो निकाल रहा दिल ये रही भाई वो बॉडी जो कि हमने ऑब्वियसली ये कैरेक्टर प्ले किया था अभी वो उसका वो पार्ट भी दिख रहा है भाई ब्लर मारना पड़ेगा ये रहा इसका हार्ट भाई छाती में तो निकाल दिया Now देख this रहा is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. एग्जामिन ओ ये रहा Body is positioned on the table. Ritualistic. ओके ये रही भाई Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? नहीं नॉट द को इंसिडेंट जो भी बोलते हैं भाई यहाँ पे बॉडी मिली है कौन से प्रीवियस मदर
पहले के मर्डर्स भी ऐसे ही हुए थे, लाइक क्या कहना चाह रही है? इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन करते हैं अभी हम। एक और कलेक्ट, ओ The ये killer left the heart right next to the body. Incised stab wound, chest cut open, heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. जिस फिर से लगाऊं कि इसमें अरे लग जा। Nope. Heart removed from Okay. chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. पहले के मर्डर से मैच हो रहा है भाई। द विक्टिम, द किलर्स, अब इनकी बारी है। ओके, इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन, लर्न अबाउट द विक्टिम, लर्न अबाउट द किलर। ओके, Who is our victim? विक्टिम Who की तरह killed भाई। him? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. नाइटिंगेल। He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? तू जानता है? Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. मतलब ये क्या है? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it ओके, for a दो camera? पहले इन्वेस्टिगेट कर Multiple लिया यार। people were here. Multiple killers? भाई बहुत कुछ मिल रहा है मेरे को, पहले सारे जो सबूत है इकट्ठे कर लूँ मैं भाई। ओके, हो गया, बात करते इससे। भी जानता है तू उस विक्टिम को भाई? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. अच्छा, So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to डिप्रेशन में आ गया बंदा। paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. हो गया। क्या रहा भाई केस बोर्ड मेरा? ये और मिले हैं मेरे को। तो विक्टिम कहाँ गया वो? विक्टिम और कुछ किया करने को यहाँ? ओह, यहाँ पे कुछ रह गया है। Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. यहीं For मरा now, था at वो। least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. चल भाई देखते हैं क्या हुई केस में, आगे चलते हैं। मेरे लग जा भाई। ओके, Boot prints indicating multiple killers. हाँ बहुत सारे जने होते हैं Quite the भाई। party. एंड Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. तो यहाँ तक केस पहुँचा है भाई। Why here? Why now? बात तो सही है तेरी। Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation.
piece it together. You can use profiling inside Say's mind place to get inside heads of... Okay. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Okay. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. तो अभी जो हमें पता है जिसका जो मर्डर हुआ है वो एक एजेंट था FBI में जो कि 13 साल के लिए गायब हो गया था, लेकिन अचानक से वो एक मिस्टीरियस तरीके से मार दिया जाता है। लेकिन हमारी जो मैडम को लग रहा है वो लग रहा है कि ये एक कोई मर्डर नहीं है, ये कोई डार्क रिचुअल परफॉर्म किया गया है इसके ऊपर। तो हम अगले एपिसोड में थोड़ा केस को और आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो को, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँ। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।